Good morning, student. In this lecture, we discuss about the two-dimensional transformation in the computer graphics. So let's start with the definition. What is the transformation? Transformation means to change something, the something in the size, shape, orientation. So in 2D transformation, two-dimensional transformation, there is a change in the position, size, orientation, and shapes. Position change in position mean translation. Change in size means scaling the size of any object. Orientation means we have to change the rotation according to the angle wise. So next one is the shape. Change the shape of any object, any circle, rectangle, or any object, that is known as the shade. So last one is the reflection, that is the mirror image of any geometrical object like circle, rectangle, line, polygon, etc. So the transformation play an important role in the computer graphics to reposition the graphics onto the screen and to change their size or the orientation. So we have the various transformations like we already discussed. The first one is the translation, second is the rotation, third one is scaling, fourth reflection, and the fifth one is shearing. So first of all, we discuss about what is the translation means. Translation means moving an object to a different position. There is an object that is placed at x-axis on the two position. So we have to place that object onto the fourth position. So we have to translate a point in two dimension by adding the translation coordinate, that is tx and ty. टी एक्स एंड टी वाई क्या है, हमारे ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट है जहाँ तक हमने मूव करना है to the original coordinate to get the new coordinate. So we have to get the new coordinates like this. If we have, for example, there is a point pxy, here is the point, and we have to place that point at this position px dash comma y dash. So there is the translation function, एक्स एक्सिस से कितना मूव करना है और वाई एक्सिस से कितना मूव करना है, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एक्स एंड टी वाई. So tx and ty are the translation vector or the shift vector on the x-axis and the y-axis. So x dash is represented by x dash equals to x plus tx, कितना ट्रांजिशन हो रही है आगे, एंड y dash equals to y जो एक्चुअल वैल्यू है प्लस जितना उसने साइज में ट्रांसलेट करना है, मूव करना है ऑन द वाई एक्सिस, दोनों को ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल we get these values like this: x and y, tx and ty, that is also represented by the point that is to be placed after the translation p dash equals to p plus t. So example is, if we have the point 2 comma 2 and tx is on the x-axis, the point is to be moved towards 6 and ty में 4. So we have to calculate the new point after the translation. So p dash equals to p dash क्या होएगा, x y एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो है 2 and 2, टी एक्स एंड टी वाई क्या है 6 and 4, दोनों को ऐड कर दो, 6 plus 2 is 8 and 4 plus 2 is equal to 6. That are the new point, that are the 8 comma 6. So this is the new point, that is 8 comma 6. This is the simplest translation or the simplest transformation that is easy to calculate. We have to know about the original points, then ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन कितनी हो रही है ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, एंड वी हैव टू ऐड दैट वैल्यूज एंड वी गेट द न्यू पॉइंट्स. So here is also the example. Here the coordinates are 2 comma 5, 4 comma 6 and 6 comma 3. This is example for the triangle, and we have to translate that triangle on 3 unit on the x axis and 4 unit on the y axis. This is the actual points of the triangle, and we have to move that triangle onto the 3 units of on the x-axis and the 4 unit on the y-axis. So tx equals to 3 because the 3 unit on the x-axis and ty equals to, यहाँ पर 4 की जगह पर -2 है, so ty equals to -2. So we have to need to
know about the formula of the translation. P dash equals to P plus T. So to translate the this point A becomes A dash equals to A plus T, and B is equal to B plus T, and C equals to C plus T. So टी वाई यहाँ पर हमने -2 लेना है और टी एक्स इक्वल्स टू 3 लेना है। तो वैल्यूज़ जो मर्जी लो उसके साथ आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। सो ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस टी, तो उसके लिए क्या है, ए की वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 5, ट्रांसलेशन क्या है 3 टू -2, 3 प्लस 2 5 बन गया, 5 माइनस 2 3 बन गया। तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गए 5,3। ऐसे ही हमने बी के कैलकुलेट करने हैं। 3,6 आर द एक्चुअल कोऑर्डिनेट। सो टी एक्स क्या है 3 एंड टी वाई क्या है -2। 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 2 4। तो न्यू कोऑर्डिनेट आर 6,4। सिमिलरली सी के कैलकुलेट कर लिए। 4,3 है, 4 प्लस 3 इज 7 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 3 कोऑर्डिनेट आगे एंड 3 कोऑर्डिनेट है, तो वी हैव टू ड्रॉ दैट ट्राइंगल at this place. So the new triangle is to be drawn after calculating all the points by knowing the translation vector on the x-axis, that is 3, and translation vector on the y-axis, that is -2. In this way we easily calculate the points, and we have to translate that any shape from one position to the another position.